Hello, welcome to my YouTube channel. Today in this video we are going to discuss about societal impact part 5, where we will discuss about the free and open source softwares. Uh, some of the softwares can easily be classified on the basis of their availability as well as shareability. Their classification is like first one is freeware. What do you understand by freeware? These softwares are available free of cost. A user can easily download them from the internet and can easily use them without paying any charges or fees. Okay. So, however, they don't provide any type of liberty to modify the entire software or charging a fixed fee for its distribution. Freeware means you have not to pay any fee for that. A best software development company can develop its own freeware to reach out to more customers. It is a sort of temptation given by various software development companies to reach to their customers. अपने कस्टमर तक पहुंचने की का एक माध्यम है फ्रीवेयर, जिसके माध्यम से वो कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं और अपने सॉफ्टवेयर्स के बारे में उनको कुछ दिखा सकते हैं, बता सकते हैं. इट इज शॉर्ट ऑफ यू कैन से एडवर्टीजमेंट करने के का माध्यम है. एक तरह से वो छोटे मोटे सॉफ्टवेयर्स को आप तक पहुंचा देते हैं और जिससे आपको उनके सॉफ्टवेयर के बनाने का तरीका, स्ट्रक्चर्स का पता चलता है. एंड यू गो फॉर सर्चिंग वेरियस काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम सच कंपनीज. तो फ्रीवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है. इसे यूज़र आसानी से डाउनलोड कर सकता है इंटरनेट से और बिना किसी चार्ज के उसे वो आसानी से इजीली यूज़ कर सकता है. ओके. So, but they don't provide any type of liberty to modify the entire software. Modification is not possible because they are not giving you the, source code. Some of the examples of these softwares are Adobe Reader, Skype, IMG Burn, Audacity, TeamViewer. All these are freewares. Okay. Shareware क्या होता है? This software is distributed freely to users for a fixed trial basis. It generally comes with a set time limit. कुछ समय के लिए इसे वो देता है, फिर उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है. एक महीने के लिए, 3 महीने के लिए, like that. And on the expiration of the time limit, the user is finally asked to pay a fixed fee for the continued services. अगर आप उसे continually अपने सिस्टम में रखना चाहते हैं, so fixed fee has to be paid for that after that trial period. आप देखते हैं कुछ कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे आते हैं, ट्रायल पीरियड के लिए होते हैं, फॉर सर्टेन period, maybe 1 month, maybe 6 months, maybe 3 months, and after that they will put some charge on that. Its cost will be has to be paid. Thereafter, then only it can be continued on your system. So there are different types of shareware such as freemium, donationware, adware, demoware, etc., etc. These are sharewares. Now, some of the examples of shareware are Adobe Acrobat, PHP Debugger, WinZip, GetRight. All these are sharewares. WinRAR, आजकल आप WinRAR भी यूज कर रहे हैं, WinZip का ही एडवांस वर्जन यू कैन से, दैट इज ऑल्सो शेयरवेयर. ओपन सोर्स किसे कहते हैं? इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, सच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स आर यूजुअली अवेलेबल to users along with their source code, which means that the user can easily modify and distribute the software as well as add additional features to them. They can either be chargeable or free. So open source जो है वो openly you can use it because its source code is available with the client or with the person who has downloaded the software. आप उसे if you know such programming, if you know that labels programming, advanced programming, so you can modify
जिस लैंग्वेज में बना हुआ है सॉफ्टवेयर उस लैंग्वेज में आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं इफ़ यू नो दैट लैंग्वेज डीपली, एंड दैट इट कैन बी then it can be redistributed, distribute to others, ठीक है, by adding some features, extra features as a modification. So it can either be chargeable or free. Sometimes it is chargeable, sometimes it is free. So that is open source. Few of the examples of such softwares are Mozilla Firefox, Thunderbird, GNU Compiler Collection, Moodle, Apache Web Server. These are open source softwares. Now free software, एक तो आपने फ्रीवेयर पीछे देखा था, फ्रीवेयर, और ये है फ्री सॉफ्टवेयर. So free software is a software that can be freely used, modified and redistributed with only one restriction. Any redistributed version of the software must be distributed with the original terms of free use. ठीक है, आपका जो जो टर्मिनल जो टर्म्स जो लाइसेंसिंग आपके ओरिजिनल सॉफ्टवेयर के साथ है, सेम टाइप का रिस्ट्रिक्शन जो आप मॉडिफाई करके सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके साथ भी सेम टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन विल बी प्लेस्ड. ठीक है, it is saying that redistribution version of the software must be distributed with the original terms of free use, that same terms and conditions. Modification and distribution known as copy left, इसे हम copy left कहते हैं. The definition of free software is stipulated as a part of GNU project and by the Free Software Foundation. ये दो संस्थाएं हैं, GNU but not Unix, और ये FSF फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन. ये जो डेफिनेशन आपको फ्री सॉफ्टवेयर की आई है वहां से आई है. फ्री सॉफ्टवेयर में बी पैकेज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर अ फी. द फ्री मीन्स, फ्री का मतलब क्या है यहाँ पर? फ्री का मतलब है कि ऐसा नहीं कि चार्ज ना लिया जाए, नॉमिनल चार्ज लिया जा सकता है. फ्री रेफर्स टू द एबिलिटी टू रीयूज इट, मॉडिफाई इट or unmodified as a part of another software package. As part of the ability to modify, users of free software may also have access to and study the source code. इनका जो सोर्स कोड है उसे आप स्टडी भी कर सकते हैं. एबिलिटी टू मॉडिफाई, यूजर्स ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर may also have access to and study the code. For example, Linux operating system is a free software, तो उसमें आप उसे फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर नॉमिनल चार्ज भी हो सकता है. फ्री सॉफ्टवेयर का मतलब है कि यू आर फ्री टू यूज. फ्री टू यूज का मतलब फ्रीली यूज कीजिए, मॉडिफाई कीजिए, रीडिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ऐसा कर सकते हैं. बट जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा? विद द सेम टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट वाज ओरिजिनल बिफोर मॉडिफिकेशन, राइट. सो ये डेफिनेशन है GNU प्रोजेक्ट और फ्री सॉफ्टवेयर की तरफ से, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन की तरफ से, कि फ्री सॉफ्टवेयर क्या है. ओके. प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो जिस कंपनी का, जिस सॉफ्टवेयर का कोई ओनर हो, कोई प्रोप्राइटर हो, सारा कंट्रोल, सारा रिस्ट्रिक्शन, सारी लाइसेंसिंग उसके हाथ में हो उस सॉफ्टवेयर की. Proprietary software is any software that is copyrighted and bears limits against use, distribution and modification that are imposed by its publisher, vendor or developer. उसके पास सारा राइट है. ठीक है, कॉपीराइट इज विद दैट vendor, with that publisher, with that developer who has developed it originally. डिस्ट्रीब्यूशन और ये इस तरह के मॉडिफिकेशंस ऐसे सॉफ्टवेयर्स में पॉसिबल नहीं है. प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर रिमेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर और क्रिएटर एंड इज यूज्ड बाय एंड यूजर्स और ऑर्गेनाइजेशंस under predefined conditions, and those conditions are defined by the proprietary software owner, creator. Proprietary software may also be called closed source software or commercial software. It is often used to describe software that is not open source or freely licensed. Remember, it is not open source
nor freely licensed। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो प्रोप्राइटर की प्रॉपर्टी है, प्रोप्राइटर का इंटेलेक्चुअल राइट है, उस क्रिएटर का इंटेलेक्चुअल राइट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, और उसे ना तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ना तो मॉडिफाई कर सकते हैं, और इस पर प्रॉपर कॉस्टिंग होती है। उस कॉस्ट को पे करने के बाद ही आप इस सॉफ्टवेयर को ओनर से परचेज कर सकते हैं। जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, ये माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसे आपको खरीदना होगा ओरिजिनल कॉपी उसकी। ठीक है, इसी तरह से वेरियस अदर सॉफ्टवेयर्स ऑल्सो they are the intellectual property of a particular owner, particular creator, and they can charge some fees. It is not freely available, it cannot be freely downloaded, it cannot be redistributed, it cannot be modified. Everything is under the control of the proprietor of that software, right? Examples include operating system, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स जो भी हैं, एंड फाइल फॉर्मेट्स, पीडीएफ वगैरह जो है, ये जैसे एडोब का होता है, इसी तरह से डॉक जो है फाइल फॉर्मेट माइक्रोसॉफ्ट का, वर्ड का वो है प्रॉपर्टी है, वर्ड का क्रिएशन है, माइक्रोसॉफ्ट का क्रिएशन है। तो लाइक दैट ये सभी जो है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स के अंदर आते हैं। सो in this video you have studied about freeware, shareware, open source, free software and proprietary software. If here FOSS जिसे कहते हैं फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, FOSS, फ्लॉस free library open source software. So it is a software that can be classified as both free software as well as open source software, that is anyone can freely license to use, copy, study and charge the software in any way, and the source code is openly shared so that people are encouraged to voluntarily improve the design of the software. This is the definition given by Wikipedia, free and open source software. Some of the free and open source softwares are Linux operating system, Linux and Ubuntu, free and open source. DBMS, MySQL, MongoDB, SQLite, these are free and open source softwares. As a programming language, Java, PHP and Python, these are free and open source softwares. As internet browser, Chrome and Firefox, etc., they are free and open source software. As internet server, it is Apache HTTP server, Apache Tomcat, these are server softwares, that is free and open source. So these are various categories, under various categories, various number of free and open source softwares, right? Now you have learned all these things. If you have understood it, please like, share and subscribe the channel as well as video too. Thank you for watching. Thank you.